Hare Krishna. Welcome to our ISKCON Punjabi Bagh YouTube channel. The purpose of ISKCON Punjabi YouTube channel is to bring in front of you daily the beautiful darshan of the Lord. Melodious kirtans, Daily discourses, daily guidance, upcoming new festivals, and much more. So therefore, please stay connected with us. For that, you have to click the subscribe button And press bell icon. Thank you. Hare Krishna. 13. Srimad Bhagavatam Namaskar Adhyaya Shlok Sankhya 12 और 13. So this is the narration of the telling of how the sons of King Sagara were burned to ashes by the fire emanating from the eyes of Kapila Muni. ये जो प्रसंग है सागर पुत्रों किस प्रकार से भस्म कर दिए गए थे भगवान कपिल देव के आंखों से निकली हुई अग्नि के कारण उसके बारे में Let us recite the Guru Paraparam piece. Nama Om Vishnu Padaya Shapastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Devi Sesha Shanyavari Paskadya Desatarane Om Aginata Manindasya Gena Gena Sadakaya Chakson Militam Gena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Caitanya Mahaprabhu Stapadam Gena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darate Svapadantiham Vandeham Sri Guru Sri Jita Parakamanam Sri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Shagajatam Sahaganana Gunitandatam Stam Sajevam Sadvaitam Savadutam Varijana Saitam Sri Krishna Caitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Nitamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopaka Kanta Radha Kanta Namostate Tapcha Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshware Vaishnava Sutta Devi Paramami Harishware Vanchakapa Gurubhascha Kripa Sindhu Bhaivaja Patidam Bhavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. So I'll review a little bit what happened in this narration coming up to today's verses. इस प्रसंग के बारे में कि आज के श्लोक तक आने तक क्या हुआ संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा. So the King Sagara Maharaj, he had performed an Ashwamedha Yajna, which is the horse sacrifice, but as happens from time to time, Indra, the king of heaven, becomes paranoid when emperors do this Ashwamedha Yajna. सागर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया और जैसा कि अक्सर हमने सुना है कभी-कभार इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं जब पृथ्वी के राजा इस प्रकार के यज्ञ करते हैं. He's such a big emperor, yet on the other hand, the Lord of the universe, on a small scale, I mean, of course, Lord Vishnu is the Lord of the universe, but he's lording over the universe, big power, millions of Kshatriya fierce warriors, huge treasury, dancing girls, you know, everything. तो राजा इंद्र इस ब्रह्मांड के राजा हैं, उनके पास इतना ऐश्वर्य है. हालांकि ब्रह्मांड के असली राजा तो भगवान विष्णु ही हैं, परंतु छोटे स्तर पर जो इंद्र हैं वो इसके यहाँ के देवता हैं और उनके पास इतना ऐश्वर्य है, उनके पास कई प्रकार के धन हैं, उनके सैनिक हैं, नृत्य करने वाली अप्सराएं हैं. In spite of all of this
infinite power relationship to power on this earth anyways. And as far as power in heavens, naturally, King Indra is personally the most powerful warrior on the heavenly planets with his thunderbolt that normally doesn't fail and so forth. उनकी शक्ति अनंत है और स्वर्ग लोक पर सबसे शक्तिशाली जो योद्धा हैं वो भी इंद्र हैं और जो वो बिजली गिराते हैं वो कभी भी चूकती नहीं है. I say normally it doesn't fail because it did fail when he tried to kill Vritasura with it. He was unable to kill Vritasura with his famous thunderbolt, which could destroy everything, but he could not kill Vritasura. साधारणतः उनका जो हथियार है वो कभी चूकता नहीं है, परंतु वृत्रासुर के प्रसंग में देखते हैं कि सारे अस्त्र शस्त्र उपयोग करने के बाद भी वो वृत्रासुर का वध नहीं कर पाए. So such a big emperor, yet he seems to be insecure. Inwardly he seems to be insecure, paranoid. हालांकि इतना बड़े वो राजा हैं परंतु आंतरिक रूप से बहुत असुरक्षित हैं. ये देखने में विरोधाभास प्रतीत होता है. So Radha Raman, what is he paranoid about? तो वो किस विषय में इतने असुरक्षित हैं, भयभीत हैं? Big emperor, all powerful, millions of soldiers, undefeatable normally, unless it's, you know, Hiranyakashipu or Hiranyaksha, such demons he couldn't defeat, but otherwise, as far as everybody else in the universe, undefeatable. तो इतने बड़े-बड़े राजा, लाखों उनके योद्धा हैं और ऐसे क्यों किसी से पराजित ना होने वाले योद्धा. साधारणतः कभी-कभार हम देखते हैं बहुत शक्तिशाली दानव होते हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष से, तो अलग बात है, परंतु उसके अतिरिक्त वो अपराजित हैं. So what is he afraid of, Radha Raman? तो वो किस चीज से भयभीत हैं इतने शक्तिशाली होने के बाद भी? Talk. To secure his own position. Into the mic. To secure his own position. To secure his own position. Yes. His insecurity is so, that means he's like the modern politicians, you know. The modern politicians are always paranoid because they know somebody is after the position for sure. बिल्कुल सही होता है कि वो इसी चीज को लेकर सुरक्षित हैं कि उनकी गद्दी उनसे ना छिन जाए. आधुनिक नेताओं की तरह वो भी असुरक्षित हैं. So what happens is whenever some emperor performs the Ashwamedha Yajna, Indra becomes paranoid that they're performing the Yajna in order to get the power and Sukriti to take over his kingdom. तो कभी भी जब राजा अश्वमेध लेके इस प्रकार की यज्ञ संपन्न करते हैं तो इंद्र को चिंता हो जाती है कि इनको इतनी सुकृति ना प्राप्त हो जाए कि ये इस स्वर्ग लोक के राजा बन जाए या उनको उनका राज्य प्राप्त हो जाए. So, what other famous incident is in the Bhagavatam regarding King Indra becoming paranoid at an emperor performing Ashwamedha Yajna? What other instance? तो ऐसा अन्य कौन सा प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में जब इंद्र इसी तरह से Prabhu, you. जब कोई राजा ऐसे यज्ञ संपन्न कर रहे थे? Yes, Pritha Maharaj, Ki Jai, Hariva! At least 20 points for that one. 40 points आप पे जाते हैं. The same thing was happening as here. Sagara Maharaj was performing this Ashwamedha Yajna, and Indra kept stealing the last horse in order to frustrate the sacrifice, because he presumed due to his paranoia that the emperor was after his kingdom because of the massive sukriti that comes from the Ashwamedha Yajna. तो जब पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो जो आखिरी घोड़ा था, आखिरी जो यज्ञ होता था, तो वो घोड़ा हमेशा चुरा लेते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा मान लिया था कि पृथु महाराज का उद्देश्य इस यज्ञ को करना उनकी राजगद्दी हथियाना है. But try to understand the power of this Krishna consciousness as given by Srila Prabhupada. इस कृष्ण भावना की शक्ति का अंदाजा लगाने का प्रयास करें जो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है. Shastra says, especially during the month of Kartik, that just chanting Hare Krishna and serving Shalagram Shila
worshipping Radha and Krishna, all these auspicious activities in the month of Kartik is like performing thousands or hundreds of Ashwamedha Yajnas. So we can't imagine what Prabhupada is giving us. You want to understand Prabhupada? You people say, oh, I don't know your Prabhupada, I don't know your Prabhupada. Well, get it straight. Look what he's giving us. Present tense, not past tense. महात्म्य में बताया जाता है कि कार्तिक मास में विशेषकर जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, तो ये हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो जो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आपके प्रभुपाद जी ने क्या किया है, वो प्रभुपाद कौन है, जरा कल्पना करके देखिए कि उन्होंने किस प्रकार की विधि हमें भेंट दी है। So we can't understand with what Prabhupada called puppy brain or small little brains, the power of the process of devotional service that is gifted to us by Srila Prabhupada. So meditate on it, because otherwise you start thinking, oh, I'm so unfortunate, oh, so much. No, this is nonsense, you know. तो अंध बुद्धि से इतने महान उपहार का जो शक्ति है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा नामुमकिन प्रतीत होता है, परंतु महाराज कहने फिर भी इस बात पर अगर आप ध्यान लगाएं कि हमें जो उपहार प्रतीत हुआ है ये कितना बहुमूल्य है, बजाय हर समय रोने के। So Indra stole the horse from the sacrifice, and thus it was spoiling the sacrifice. तो इंद्र ने वो अश्व चुरा लिया उस यज्ञ से, और इस प्रकार से वो यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहा है। Now the emperor had some sons who were very proud of their prowess and influence. This is the 8th verse. We're just reviewing here to give the context. He had sons who were very proud of their prowess and influence. Prowess, of course, means powers and prestige and all that. तो इन राजा के कई पुत्र थे जो अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए बहुत गर्वित थे। So following, I mean, they're Kshatriyas, you know, they're also princes of their Kshatriyas. Jai Shri Shri राजकुमार थे, क्षत्रिय थे। So following the order of their father, they searched for the lost horse. तो अपने पुत्र, अपने जो पिता हैं, उनकी सेवा करने हेतु उन्होंने घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। While doing so, they dug into the earth very extensively. और उस घोड़े को ढूंढने के लिए उन्होंने पृथ्वी को बहुत गहराई तक खोद दिया। Obviously, they were not ordinary human beings. They could do huge excavations into the earth looking for the horse. They were not ordinary human beings. They were extremely powerful Kshatriyas. Remember, a Kshatriya has the power of 10,000 elephants. तो वो जो असाधारण राजकुमार नहीं थे, बहुत ही शक्तिशाली राजकुमार थे, और उन्होंने बहुत गहराई तक पृथ्वी को खोद दिया था उस घोड़े को ढूंढ निकालने के लिए। Even if you turn 10,000 elephants loose in this courtyard here, they could dig big holes, no problem. अगर 10,000 हाथियों को छोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो वो आराम से इतना गहराई तक खोद सकते हैं पृथ्वी को। So thereafter in the northeastern direction, they saw the horse near the ashram of Kapila Muni. तो उत्तर पूर्वी दिशा में कपिल मुनि के आश्रम के समीप उन्होंने वो घोड़ा पाया। So they said, here's a man who has stolen the horse. तो ये देख के उन्होंने कहा कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने घोड़े को चुराया है। He is staying there with closed eyes. वो वहाँ पर बैठे हैं बंद आँख करके। Certainly he is very sinful. और निश्चित रूप से ये बहुत पापी व्यक्ति है। Kill him, kill him. को मार डालो, मार डालो। Shouting like this, the sons of Saga, 60,000. I mean, that's a lot of sons, you know. 60,000 altogether raised their weapons. तो इस तरह से चिल्लाते हुए 60,000 जो पुत्र, 60,000 पुत्र बहुत ज़्यादा पुत्र होते हैं, उन्होंने अपने हथियारों को उठा लिया। When they approached the sage opened his eyes. और वो ऋषि की तरफ आगे बढ़े, और ऋषि ने अपनी नजर खोले। This was a maha blunder, because it not only was a sin, but it's also maha Vaishnava Aparad, because Kapila was taking the position of Vaishnav. तो
तो ये महामूर्खता थी, महावैष्णव अपराध था कपिल मुनि के प्रति। This pastime shows the danger of speculation. ये लीला दर्शाती है मानसिक गणना करने का कितना खतरा है। So by the influence, the 11th verse, by the influence of Indra, the king of heaven, the sons of Sagara had lost their intelligence and disrespected the great personality. तो स्वर्ग के राजा इंद्र के प्रभाव से सगर के पुत्रों की बुद्धि मारी गई, जिसमें उन्होंने एक महापुरुष का अपमान कर दिया। Consequently, fire emanated from their own bodies, and they were immediately burned to ashes. फलस्वरूप उनके शरीरों से अग्नि निकलने लगी और वे तुरंत ही जलकर राख हो गए। So Prabhupada comments that the fire is already within the body. So in this case, by the mystic power of Kapila, the fire that was already in their body was triggered and amplified, and thus they burned to death. श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि शरीर के भीतर पहले से ही अग्नि रहती है और हमें इसका अनुभव है कि इस अग्नि का ताप घटता बढ़ता रहता है। सगर महाराज के पुत्रों के शरीरों के भीतर की अग्नि इतनी दग्ध हो उठी कि वे सब भस्म हो गए। So the fire's increased heat was due to their misbehavior and aparad. एक महापुरुष के प्रति दुर्व्यवहार के कारण अग्नि का ताप बढ़ गया था। Such misbehavior is called mahad vyatikarama. ऐसा दुर्व्यवहार महद व्यतिक्रम कहलाता है। They were killed by the fire of their own bodies because of insulting a great personality. वे अपने शरीरों की अग्नि से मर गए क्योंकि उन्होंने एक महापुरुष का अपमान किया था। So the narration continues in the 12th verse. तो ये प्रसंग आगे श्लोक संख्या 12 की तरफ बढ़ता है। It is sometimes argued that the sons of King Sagara were burned to ashes by fire emanating from the eyes of Kapila Muni. कभी-कभी ये तर्क दिया जाता है कि राजा सगर के सारे पुत्र कपिल मुनि की आंखों से निकली अग्नि से भस्मसात हुए थे। So who's speaking here? तो ये कौन बोल रहा है ये श्लोक? Who is speaking? कौन इस श्लोक का उच्चारण कर रहा है? That was a 10-second question. If you don't answer in 10 seconds, the bell goes off. तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 10 सेकंड थे। 10 सेकंड अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो Who's the speaker here, Prabhu? You speak English, come on, you heard the question. You're trying to buy some time. The heat is coming, all right? Who is the speaker? This proves this Kali Yuga. Your time is up. Huh? Shukadeva Goswami, you need more RAM. You're a computer man, come on, you know? You need more RAM in your computer. Yes? महाराज कह रहे हैं कंप्यूटर मैन है कि रीड ओनली मेमोरी और ज़्यादा चाहिए। So Shukadeva Goswami has explained that it is sometimes argued that the sons of Sagar were burned to ashes by the fire emanating from the eyes of Kapila Muni. 12th verse. लेकिन विद्वान पुरुष इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि कपिल मुनि का शरीर नितांत सात्विक था। अतः उसमें क्रोध के रूप में तमोगुण प्रकट नहीं हो सकता, जिस तरह देव आकाश को पृथ्वी की धूल दूषित नहीं कर सकती। This statement, however, is not approved by great learned persons. लेकिन विद्वान पुरुष इस बात की पुष्टि नहीं करते। So we should learn from this statement by Shukadeva Goswami that even a great Nijasiddha devotee like Shukadeva Goswami, he's citing prior authority of Vaishnava saints. तो यहाँ देखते हैं हालांकि श्रीला सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं, फिर भी वो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनको उद्धृत कर रहे हैं अपने। Just like Srila Prabhupada always references the works by Jiva Goswami, Rupa Goswami, especially fond of so many of the books by the Acharyas that he used as his references in writing his famous Bhaktivedanta purports. तो
तो जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी और बहुत ही वो रुचि रखते थे बहुत सारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनको उद्धृत करने में, तो उनके तात्पर्य में उनके प्रसंग आपको प्राप्त Srila Prabhupada quoted extensively from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, one of our greatest saint scholars in our line. तो उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उद्धृत किया, जो एक महान आचार्य हैं और बहुत ही पंडित. So this is one of the signature qualities of a bona fide spiritual master. तो ये प्रामाणिक गुरु के लक्षण हैं. He's not trying to come up with something new and speculations, but rather he's repeating the words and writings of the great saints, the previous acharyas, without any envy. तो मानसिक गणना करके कोई नई चीज निर्मित नहीं करते, बल्कि वो पूर्ववर्ती आचार्यों को दोहराते हैं और उनमें ऐसा करते हुए कोई द्वेष भाव नहीं रहता. Nowadays there's so many personalities with long hair and earrings and charisma and shakti, and maybe they can do some tricks also, and posing as guru. आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बड़े-बड़े बाल हैं, कानों में बाली पहनते हैं और शायद बहुत ही आकर्षक हैं और उनके पास कुछ शक्ति भी है जिससे कुछ जादू कर सकें. But this is never supported, because a real bona fide guru takes the lotus feet of the previous saints and he puts them on his head and he repeats. That's a bona fide spiritual master. परंतु एक प्रामाणिक गुरु कौन है जो पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमल अपने शीर्ष पर धारण करता है और उनके कथनों को दोहराता है. So Shukadeva Goswami is taking the position that Kapila Muni's body is completely in the mode of goodness and therefore cannot manifest the mode of ignorance in the form of anger. तो श्रीला शुकदेव गोस्वामी विद्वान पुरुष के मत को यहाँ उद्धृत करते हैं और बताते हैं कि जो कपिल मुनि का शरीर नितांत सात्विक था, इसलिए उसमें क्रोध के रूप में तमोगुण कभी भी प्रकट नहीं होता. Here again we see a very important lesson. तो यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं. Apparently, Kapila Muni was not even angry. कि कपिल मुनि बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थे. It seems that he was angry and that the sons of Sagar burned ashes because of his anger. ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि कपिल मुनि बहुत क्रोध हुए उनके व्यवहार से और उनके क्रोध के कारण वो भस्म हो गए. But here Srila Sukadeva Goswami is saying that such an exalted personality like Kapila Muni cannot be influenced by anger, which is born of the mode of ignorance. परंतु यहाँ श्री शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि कपिल मुनि क्रोध के प्रभाव के अंतर्गत नहीं आ सकते क्योंकि तमोगुण से उत्पन्न होता है. So he continues, just as this pure sky cannot be polluted by the dust of the earth, similarly such great souls as Kapila Muni cannot be polluted by the modes of ignorance. और वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार निर्मल आकाश को पृथ्वी की धूल दूषित नहीं कर सकती, उसी प्रकार कपिल मुनि जैसे महापुरुष कभी भी तमोगुण से प्रभावित नहीं हो सकते. So then what happened if Kapila Muni was not even angry apparently? तो वास्तविकता में क्या हुआ जब कपिल मुनि क्रोधी नहीं हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ? What happened, Prabhu? If Kapila Muni wasn't even angry and yet the sages burn into ash, I mean the sons of Sagara, they burn into ashes, what happened? Why? Vaishnava Aparad. Yes, Vaishnava Aparad. So then, who was the doer then? तो ये उनको किन्होंने भस्म किया? Nam Prem, who was the doer? He's saying it was their own fire. It was their own fire. Yeah, they made their own fire, but that doesn't mean that they were the doer in this situation. Krishna was unhappy. Yes, Prabhu. He's saying Sudarshan. Sudarshan? Yeah, well, Sudarshan is connected with whom, though? I mean,
Sudarshan is connected with the Supreme Personality of Godhead. Maharaj, he's saying Namprabhu is saying Krishna. Huh? Krishna Kirtan. Who said no? Namprabhu. A little slow. You need more RAM in your computer also, you know. Thing is, the principle is parallel here, very parallel to the situation with Ambarish and Devarsamuni, is it not? तो यहाँ पर जो सिद्धांत है बिल्कुल उसी प्रकार से है जो हम प्रसंग में देखते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के Just like we sing the 6 Goswami songs. Dira, dira, jana, jana, priya karo. So dira means undisturbed. तो जैसे हम षट गोस्वामी अष्टम में जाते हैं तो धीर का अर्थ है जो कभी भी विचलित नहीं होता. So Ambarish Maharaj wasn't disturbed the slightest by the severe offense made by Durvasa Muni. He wasn't disturbed. जैसे हम देखते हैं अम्बरीश महाराज किंचित भी विचलित नहीं हुए हालांकि अम्बरीश महाराज ने इतना बड़ा अपराध उनके प्रति किया. But who was disturbed? Obviously somebody was disturbed. तो कौन इसको उनके अपराध को देख के बहुत विचलित हो गए? Who was disturbed, Prabhu? What did you say? दुर्वासा. Durvasa? Who was disturbed? I mean, Durvasa is not the cause of all causes, you know. I mean, that's a dead giveaway. Who is disturbed then? Yes, Prabhu, with the purple sweater there. You. Come on, talk to him in Hindi. They're helping him. That's cheating. All right, Prabhu. Lord Vishnu. Lord Vishnu, Haribal. See, this principle we have to understand, that a Vaishnava may not be disturbed by even serious aparad. As Prahlad Maharaj was also Dhira, he was not at all disturbed by the extreme circumstances which he was put into. जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज वो भी विचलित नहीं हुए हालांकि उनको बहुत ही विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा. Stomped on by giant elephants. बड़े-बड़े हाथियों के द्वारा कुचले जाने का प्रयास किया. Thrown off a cliff. एक बड़े चट्टान से thrown into boiling oil. एक उबलते हुए तेल के अंदर डाला गया. Attempted to be pierced by demons with tridents. और बड़े-बड़े असुरों ने हथियार से उनको मारने का प्रयास किया. But he remained Dhira. परंतु वो धीर. So this is Vaishnava. ये वैष्णव. So on the other hand, we see the Lord becomes very disturbed. तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो भगवान है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. When his devotees are harassed by demons or by anything else. जब उनके भक्तों को असुरों द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है. So even in our modern movement, in our preaching work, we see that demons attack our movement, like in Russia and in Kazakhstan. आधुनिक समय में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से असुरों द्वारा भक्तों के समाज पर आक्रमण होते हैं, जैसे रशिया के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर. But those demons who attack the Vaishnavas, they will have to remain in hell till the end of the universe. Very severe. परंतु ऐसे असुर जो वैष्णवों पर इस प्रकार का आक्रमण करते हैं या अपराध करते हैं, उनको इस ब्रह्मांड के अंत तक नष्ट लोगों में. So no one should think that justice isn't done. Don't have any doubt about this. The justice will be, they will burn in oil, they will burn in the lowest regions of hell, they'll be tortured until the end of the universe, or beyond that even. ऐसा कभी मत सोचिए कि ये अन्याय है, न्याय निश्चित रूप से रहेगा. और So नरकों में बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा.
गरम गरम तेल में उबाल कर Nowadays, judges may be crooked, but the laws of nature and the laws of karma are not crooked because they're directed by the Supreme Personality of Godhead. हो सकता है आज के समय के जो न्यायाधीश हैं वो कभी-कभी All right, now the treat. क्रूर हो, परंतु जो प्रकृति के नियम हैं, जो भगवान के जो न्यायाधीश हैं, वो सबके साथ न्याय करते हैं. 13's on the board? Okay. Yasharita Sankyamani Jideha Nor Yasarita Sankyamani Jideha Nor. Let's try to crisp it up a little bit, please. More crispy. इसको स्पष्ट रूप से साथ में एकजुट होकर दोहराएंगे. Yasarita Sankyamai Jideha Nor. Yaya Mamukshus Tarate Tiratmayam. Yaya Mamukshus Tarate Tiratyamam. Vavaravam Mrityu Patam Vipashitaha. Paratma Bhutasya Katam Pritanmati. Yes, Yorita Sankyamai Jidehano. Yaya Mamukshus Tarate Duratyayam. Pavaravamam Mityupatam Vipeshita. Paratma Bhutasya Katam Pritam Miti. Next. Loudly, please. Louder. Vaishnavis.
the whole thing, I mean? But directly in Hindi, the same thing. Okay. Well, yeah. I'll give the English translation quickly. But then I'll give the whole translation and give the Hindi. Translation. Kapila Muni enunciated in this world, material world, the Sankhya philosophy, which is a strong boat with which to cross over the ocean of nescience. Indeed, a person eager to cross the ocean of the material world may take shelter of this philosophy. And such a greatly learned person, situated on the elevated platform of transcendence, how can there be any distinction between enemy and friend? कपिल मुनि इस जगत में सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया, जो ज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए दृढ़ नाव है। निसंदेह भव सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को इस दर्शन का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ऐसे महापुरुष में जो अध्यात्म के उच्च पद को प्राप्त हो, एक मित्र तथा शत्रु में कोई अंतर कैसे हो सकता है? Purport by Srila Prabhupada. One who is promoted to the transcendental position, Brahma Bhuta, is always jubilant, prasannatma. जो दिव्य पद को प्राप्त होता है ब्रह्मभूत, वह सदैव प्रसन्न रहता है, प्रसन्नात्मा। So in Detroit, USA, I asked Srila Prabhupada, I was discussing about this Brahma Bhuta Prasannatma, the shloka from Bhagavad-gita. तो डिट्रॉइट के अंदर महाराज बताने में श्रीला प्रभुपाद से चर्चा कर रहा था इस श्लोक के ऊपर भगवद गीता से ब्रह्म भूत प्रसन्न Na sochiti na kanchati is the rest of the verse. ना सोचती ना कांचती। So I said, well, Srila Prabhupada, in this we see that sometimes devotees are still subject to lamentation and these kind of material effects, although they are supposed to be situated on a Brahma Bhuta platform. तो मैंने श्रीला प्रभुपाद से पूछा, अक्सर हम देखते हैं कि भक्त भी इन प्रभावों से प्रभावित हो जाते हैं। Here Srila Prabhupada is defining Brahma Bhuta as the transcendental position. That means above the modes and nature. श्रीला प्रभुपाद ब्रह्म भूत स्तर को परिभाषित करते हैं कि जो तीनों गुणों से ऊपर हो। But Srila Prabhupada's answer to me was very shocking. परंतु श्रीला प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। He said, then not devotee. तो उन्होंने कहा श्रीला प्रभुपाद ने In other words, नहीं है। practically what we have is a shadow attachment. It's called shadow attachment. We have just a shadow of real bhakti because we have not yet attained Shuddha bhakti. तो वास्तव में देखा जाए हमारे पास भक्ति की छाया मात्र है। असली जो शुद्ध भक्ति है अभी हमारे पास प्राप्त नहीं है। So, therefore, we are subject to sliding into material consciousness. इसलिए हम भौतिक चेतना में बार-बार फिसल जाते हैं। But this is not the platform of Anyabhilasa Tasanam Gyanam Kamadi Anavita, as defined by Srila Rupa Goswami or pure devotional service. परंतु ये उत्तम भक्ति का स्तर नहीं है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी परिभाषित करते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनामृतम। Because hankering and lamentation is manifestations of tamagun and rajagun, which is not present on the platform of pure devotional service. क्योंकि सोचती और कांचती ये तमोगुण और रजोगुण के लक्षण हैं। Therefore, Srila Rupa Goswami says it's rarely attained. तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये बहुत शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। So after 5 or 7 years of devotional service in this lifetime, I should not think, yes, well, I'm very advanced now, I'm fixed up, I'm finished product. This is a formula for actual fall down. तो
तो इसलिए इस जीवन में 5-7 वर्ष भक्ति करने के बाद ये किसी को नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं सबसे उच्चतम पद पर स्थित हूँ. Well, there's an ancient saying of great wisdom, as actually Vaishnava wisdom, it might as well be straight out of the Shastra. Sorry. Ancient saying of great wisdom. तो जो महान विद्वता की बातें हैं पुरातन काल से चलती हुई. That is, pride goeth before a fall. पतन से पहले गर्व आता है, घमंड आता है. We have sufficient experience, don't we? तो हमारे पास पर्याप्त अनुभव है इस कहावत का. We have experience from our own lives. अपने जीवन काल में देखें. As soon as we get puffed up, then in order to favor us, Krishna will smash us down. तो जैसे ही हमें थोड़ा सा भी घमंड आएगा, कृष्ण हमारे ऊपर करुणा करके हमें स्मैश कर देंगे. That's true of all his devotees. और प्रत्येक भक्त के साथ ही सत्य है. Just like the residents of heavenly planets headed by King Indra, जिस प्रकार से जो स्वर्गीय लोक के निवासी हैं, जिनका नेतृत्व इंद्र कर रहे हैं, they get very puffed up with all their opulence and powers and sex life, you know, unlimited dancing girls. They're Kshatriyas, they can have sex with whoever they want. तो वहाँ पर ऐश्वर्य शक्ति अपने यौन जीवन से अनंत वहाँ पे नृत्यकाएं हैं और क्षत्रिय किन्हीं के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं. इसको पाप नहीं लगता. You know, you want that kind of lifestyle, you can get that kind of lifestyle. You can be promoted to the heavenly planets just by mumbling Nama Parad in your bead bag, and then, but the holy name is so powerful, you could accidentally end up as Indra, the king of heaven, while the sincere devotees go back to Godhead. So be careful. We all have to be careful. It's a fact. अगर आप इस प्रकार का जीवन चाहते हैं तो आपको प्राप्त हो सकता है. अपने जो जपमाला है उसमें किसी तरह से जो नाम अपराध करते हुए जो जप लेते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं. और क्या पता अचानक से आप स्वर्गलोक के राजा इंद्र की पदवी भी आपको प्राप्त हो जाए. परंतु अगर भगवत धाम जाना है तो हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए और अपराध से बचना चाहिए. As we were saying before, that we don't actually know the power of devotional service, which Srila Prabhupada has given us or is giving us. We don't know the actual power. We're getting the benefit, but we're blind. Therefore, Oma Gnati Benindasya, we're blind. We have no idea what's going on, but उपहार प्राप्त हुआ है इसका सही मूल्यांकन हम नहीं कर पाते या इसका मूल्य समझ नहीं पाते. If we're fortunate, we like serving Krishna. If we're not fortunate, we don't like serving Krishna. Even you know, we have neck beads, initiation, and all that, but there still are unfortunate devotees अगर हम सौभाग्यशाली हैं तो हमें कृष्ण की सेवा करना पसंद होगा. who don't dive deep into the nectar of devotional service. They don't dive deep. Maybe they're licking the outside of the nectar pot. Maybe. हो सकता है उन्होंने कटकी माला पहनी हो, वैष्णव वेशभूषा धारण की हो, परंतु कृष्ण की सेवा में रुचि नहीं होती. But if you do, उसके अंदर गहराई तक गोते लगाएं, उसका if you do that instead of diving deep, then the result is going to be obvious. You're going to be dissatisfied. अगर आप भक्ति रस के सागर में, भक्ति सागर के रस में गोते नहीं लगाते गहराई तक, तो आप सदैव असंतुष्ट. Just like if you're hankering after something sweet. इस प्रकार से अगर आप किसी मधुर वस्तु की इच्छा रखे हैं, and somebody hands you one crumb of a gulab jamun, a crumb, just a tiny piece of a gulab jamun somebody hands you, and you're hankering after something sweet. तो अगर आपको कोई गुलाब जामुन का बिल्कुल अल्प अंश दे दे, Are you going to be satisfied? तो क्या आप उससे मात्र उतने अंश से संतुष्ट रहेंगे? What do you think, Prabhu? आपको क्या लगता है प्रभु? No. He says, no, you're not going to be satisfied. So we've got the perfect science of devotional service, but we have to dive deep. Otherwise, we cannot ever come to that platform of Atmarama. जो हमें ये पूर्ण विज्ञान प्राप्त हुआ है भक्ति का, तो उसमें हमकी गहराई में उतरना पड़ेगा.
Srila Prabhupada is giving us everything, all the tools, all the recipes, everything we need to become 100% successful in Krishna consciousness, but we have to take it. Srila Prabhupada हमें प्रत्येक चीज प्रदान कर रहे हैं, हर वो सुविधा जिससे हम अपने जीवन को सिद्ध करेंगे वो हमें प्रदान कर रहे हैं, हमें बस स्वीकार करना है. There's another ancient saying of wisdom, I don't know if it comes originally from India or if it's British. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. तो एक अन्य पुरातन काल से चलती हुई कहावत है, मुझे नहीं पता भारत से है ब्रिटिश से आ रही है, कि आप एक घोड़े को नदी के तट तक तो ले जा सकते हैं, परंतु उसको पानी नहीं पिला सकते. So we're very, very thirsty. We have arrived at the water, but if we don't take a drink, whose fault is that? तो हम बहुत प्यासे हैं और हम नदी के तट तक भी पहुंच चुके हैं. तो अब अगर हम पानी नहीं पीते तो ये किसका दोष है? But what we do is we blame others. और हम फिर दूसरों के दोषारोपण करते हैं. It's his fault. He said that, he did this, and she said this, and he did that, and therefore I'm miserable, I'm unhappy because of them, and they did this and that, and it's all his fault. ये इसकी गलती है, इसकी गलती है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ. And of course, if you're thinking and talking and like that in association of devotees, then you make aparad, and then everything gets worse. और अगर आप इस प्रकार से सोचते या व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ में, तो अपराध भी होता है, इससे चीजें और खराब होती हैं. Therefore, Srila Rupa Goswami is given the success formula, the nectar of instruction. इसलिए उपदेश अमृत में श्रील रूप गोस्वामी सफल होने का हमें राज बताते हैं. Vachavega, manasakroda vega. Yes, we have got to control the tongue. You can't just lash out at somebody, another devotee, because they do something that annoys you, you lash out at them, then you get a reaction, Vaishnava Purana, you see? Very dangerous. So, Prabhupada continues, the transcendentalist is unaffected by the false distinction between good and bad in the material world, in other words, the dualities. Therefore, such an exalted person is sama sarveshu bhuteshu. That is to say, he is equal towards everyone, not distinguishing between friend and enemy. So, that's clearly stated in the Bhagavad-gita. The humble sage sees with equal vision a learned gentle Brahman, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. This is the platform that Srila Prabhupada is describing here. That's the actual Brahma Bhuta platform. Not even distinguishing between friends and enemies. So, when Prahlad Maharaj is confronted by Hiranyakashipu, the 7th canto, he says, I've heard of this kind of men before, that distinguish between friends and enemies. Now I see in my own father. तो वो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो शत्रु और मित्र में भेदभाव करते हैं, और अब मैं अपने पिता के अंदर भी वही देख रहा हूँ. Ultimately, it's demoniac because in the 16th chapter of Bhagavad-gita, the mentality of the demon is described. तो ये असुरी प्रवृत्ति है, जैसे कि भगवद-गीता 16वें अध्याय में इसका वर्णन आता है. He is my enemy, I will defeat him. I will gain more and more wealth, power. Krishna spoke this 5,000 years ago. Does it sound like modern politics to you? It's timeless truth. Timeless truth. Whether 5,000 years ago or 5 million years ago, this is one of the tests of the absolute truth.
ये परम सत्य का एक निरीक्षण लक्षण है. So, therefore, such an exalted person is Sama Sarveshu Bhuteshu. ऐसा महान पुरुष समा सर्वेषु भूतेषु होता है. That is to say, he is equal towards everyone, not distinguishing between friend and enemy. सभी के प्रति समान व्यवहार करता है. मित्र और शत्रु के बीच भेदभाव नहीं बरतता. Because he is on the absolute platform, free from material contamination. क्योंकि वह भौतिक कल्मश से रहित परम पद पर होता है. He is called Paratma Bhuta or Brahma Bhuta. इसलिए वह परात्मा भूत या ब्रह्म भूत कहलाता है. Kapila Muni therefore was not at all angry at the sons of Sagar Maharaj. See, this is very important. इसलिए कपिल मुनि महाराज सगर के पुत्रों पर तनिक भी क्रोध नहीं थे. देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है. That's why Shukadeva Goswami is saying that it is bogus, the argument that Kapila Muni opened his eyes and burned him to ashes with the yogic fire coming from his eyes. So Shukadeva Goswami is saying this is not bona fide because the Kapila Muni wasn't even angry at the sons of Sagara. इसलिए श्रीला शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा बोलना कि कपिल मुनि की आंखों से निकली अग्नि से वे भस्मसात हुए, ये गलत है. But Lord Vishnu was. परंतु भगवान, of course, Lord Vishnu doesn't really become angry in a mundane way, the way we do. भगवान विष्णु एक साधारणता रूप से क्रोधित नहीं होते जिस प्रकार से हम होते हैं. But if he's strongly displeased, then whoever displeases him that strongly can be in trouble. परंतु वो बहुत अप्रसन्न होते हैं इस प्रकार के व्यवहार से, और जो भी उन्हें अप्रसन्न करता है निश्चित रूप से मुश्किल. So the sons of Sagara were in trouble because they deeply offended a pure devotee of the Lord. सगर महाराज के पुत्र निश्चित रूप से बहुत समस्या में आ गए थे क्योंकि उन्होंने एक महापुरुष के प्रति अपराध किया. So Prabhupada's final statement is that they were burned to ashes by the fire, the heat of their own bodies. प्रत्युत सभी अपने शरीर के ताप से भस्मसात हो गए. Any questions, comments? प्रश्न टिप्पणी. Jagaguru Srila Prabhupada ki jai, Grantara Shema Bhagavatam ki jai, Nitya Gopa Manandi Hari Hari Bolo. So that's Bhaktivedanta